Very good evening to all. So welcome to my channel Inspire Pharma. In my this video I am going to talk about the protein binding. I am going to talk about how the drug bind with the various types of the proteins in our body. So first of all, let's first talk about what is the protein binding. Whenever we intake any particular kind of a drug, that particular kind of a drug moiety always form a complex with the protein. So first of all, it bind with the proteins that are present in our body, and after bind with the various types of the protein, it form a complex. So what is a protein binding? The protein binding process is basically defined as the phenomena of the formation of the complex between the drug and between the protein molecule. Okay, so let's talk about the significance of protein binding. Why we actually target that our drugs bind with the various proteins that are present in our body. Now, first of all, the protein binding is majorly significant. So protein binding is that it prolongs the duration of the action of a drug. अगर हमारा एक particular drug जो है वो हमारी बॉडी में सिर्फ 1 hour और 2 hours के लिए एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, बट अगर उसकी प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाए तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है. So let's talk about what are the various significance or what are the various important facts of the protein binding. So significance of protein bindings of the drug is that as a protein bound drug is neither metabolized nor excreted. So whenever there is a protein bound drug in our body, ना तो वो metabolized होता है ना तो वो excrete होता है, ठीक है, it just remain as such. Okay, a bound drug always remain confined to a specific tissue or to a particular site with which it possesses a great affinity. बाउंड ड्रग मान लो वो या तो वो टिश्यू किसी टिश्यू के प्रोटीन के साथ बाउंड होगा या एक पर्टिकुलर साइट के साथ बाइंड होगा. सो अल्टीमेटली वो वहीं पर कन्फाइंड रहेगा जब तक कि वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं हो जाता और उस कॉम्प्लेक्स में से ड्रग फ्री फॉर्म में रिलीज नहीं हो जाता. सो ए बाउंड ड्रग ऑलवेज रिमेन कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक टिश्यू और टू ए पर्टिकुलर साइट. Okay, the last benefit of the protein binding is that the major benefit is that prolonged duration of the action, as the protein bound enormous size of the drug complex cannot undergo the membrane transportation. क्योंकि जब जो ये complex बनता है प्रोटीन का और ड्रग का वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर टिश्यू पे काफी लॉन्ग टाइम के लिए रहता है. सो अल्टीमेटली प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन. अगर मैं दूसरी भाषा में बताऊं तो वो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ हमारा ड्रग बाइंड हो गया, तो बाउंड हो गया, तो वो वहां से जो ड्रग होगा वो थोड़ा रिलीज होगा इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो थोड़ा रिलीज होते होते काफी लॉन्ग टाइम के लिए वो रिलीज होता रहेगा और हमें हमारा डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता रहेगा. सो दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग. मेजरली द प्रोटीन बाइंडिंग इज सिग्निफिकेंस क्या है? इट प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ द action of a drug. It increases the time period for which a particular drug remains in our body and for which a particular drug show the action in our body. Okay, and last coming to the effects of the bond. One of the another point is that कि जो bond बनता है वो किस तरह का हो सकता है. Normally there can be the two types of the bond which can be formed between a drug molecule and between a protein. That bond can be the ionic bond, that bond can be the hydrogen bond, and that bond can be the van der Waals forces kind of the bond. These are the kind of the bond which are involved in the binding of the drugs with the protein, and they are reversible. क्योंकि वो वीक होते हैं वहां से ड्रग इजिली रिलीज होता रहेगा. ठीक है, ओके, बट covalent bond is a very strong bond which form and it is irreversible. अगर किसी ड्रग मॉलिक्यूल का हमारे किसी टिश्यू के प्रोटीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बन गया, that is अनडिजायरेबल and that can lead to the serious side effects. okay, because वहां से ड्रग रिलीज ही नहीं होगा, वहां से ड्रग फ्री में आएगा नहीं. हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा ड्रग बाइंड हो, हमारा ड्रग वीक केमिकल बॉन्ड्स बनाए. ठीक है, हम ये चाहते हैं, पर हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें ड्रग का एक्शन भी प्रोलॉन्ग करना है और हमें ये भी चाहिए कि ड्रग वहां से फ्री फॉर्म में रिलीज होता रहे. अगर कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो ड्रग फ्री फॉर्म में रिलीज होगा ही नहीं, और जो कोवलेंट बॉन्ड वाला बना होगा दैट कैन लीड टू द पुटिंग सीरियस एडवर्स इफेक्ट like carcinogenicity. It can cause a cancer, it can cause a teratogenicity,
or it can cause the organ or the tissue toxicity. So this is about the certain introduction about the protein binding and the significance of protein binding. In my next video, I will talk about what are the various components with which the drug usually binds. कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं जिसके साथ हमारी बॉडी में जो ड्रग यूजुअली बाइंड करता है. Thank you so much. Keep supporting Inspire Pharma. Thank you.